गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो आज आम स्टार्ट करिया यंग्स मॉड्यूलस। यंग्स मॉड्यूलस, तो दिस इज वन मेन टॉपिक इन द इलास्टिसिटी। तो यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो यहाँ पर जानिबा यंग्स मॉड्यूलस कौन, यंग्स मॉड्यूलस इलास्टिसिटी रे कौन यूजेस। तो विदिन द इलास्टिक लिमिट, जदि मु किसी मटेरियल को विदिन द इलास्टिक लिमिट द रेशियो बाहर करूची, सो विदिन द इलास्टिक लिमिट the ratio of longitudinal stress the ratio of longitudinal stress to the longitudinal strain is defined as the Young's modulus. Strain is defined as the Young's modulus. तो आम जानते कौन स्ट्रेस, कौन स्ट्रेस इज द फोर्स पर यूनिट एरिया, तो द नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया एंड स्ट्रेन इज द चेंज इन कन्फिगरेशन बाय ओरिजिनल कन्फिगरेशन। जदि मोर हम लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन द चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ, एटा हम लिखिबा। सपोज यंग्स मॉड्यूलस इज डिनोटेड बाय y, देन आई कैन राइट द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस बाय द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। Longitudinal stress कितना हो F by A and the longitudinal strain will be delta L by L. Suppose you consider this is your length and under certain force this length is going to this length. So suppose this is length L, then this is extending by delta L, then this length will become L plus delta L. So the change in configuration delta L by L is the change in configuration and the stress, longitudinal stress it kete padibo F by A. So this is a wire as shown in the figure. This is a wire of length L and cross sectional area of length L, cross sectional area here hela A, cross sectional area A. Then after giving certain force F, this wire is suffering some elongation. तो F force देला परे तार किसी extension होची wire. So this extension is by amount delta L. Okay, the extension is by amount delta L. So मु बाहर करछि the change in length केते होची delta L by original length ला L. Then the longitudinal stress केते होची force per unit area. Then Young's modulus is given by longitudinal. Young's modulus रे definition कौन, longitudinal stress divided by longitudinal strain So therefore longitudinal stress F by A divided by delta L by L. So I can write this as FL by A delta L. FL by A delta L. This is my Young's modulus. Okay, this will be my Young's modulus. तो suppose तुमको गोटे वायर दिथिबो तार किछि एक्सटेंशन हैला, then this change in length, suppose this will be amount delta X, delta Y, delta Z or anything, then you can measure the Young's modulus. Suppose you are provided with length L, then you can find out the Young's modulus of the wire. And length L माने तुमको तो किछि देइथिबो ना केते सेंटीमीटर लेंथ हो यार कोन, जदि देइ थाए then you can find out the Young's modulus. तो Young's modulus मु केते पाई गेले y equal to FL by A delta L.
FL by A delta L. Next, if the wire has circular cross section. Next question is, if the wire has circular cross section, it is empty, then what will be my formula? If the wire has circular cross section, then area more kete hijo circular cross section area will be pi r square. If the wire has a circular cross section, wire jodi circular cross section thai more area kete hijo pi r square. Okay, then if I will calculate this Young's modulus, this will be y equal to FL by pi r square delta L. Young's modulus will be FL by pi r square delta L. Okay, if L equal to 1 meter, okay, transient length is 1, then area, okay, radius is 1 meter. So this means radius is 1 meter, then I will get y is direct equal to, y will be equal to f, then y will be equal to f. So we can define the Young's modulus. केमती डिफाइन करिया देखो, the Young's modulus of elasticity, the Young's modulus of elasticity is equal to, Young's modulus of elasticity is equal to what? Force required to extend the wire is equal to the force required to extend the wire force required to extend the wire. So तुम certain force दौच, force देला पर कौन होची extension होची wire of unit length and unit area of cross section, of unit length and unit area of cross section unit area of cross section, okay, of unit length तार extension suppose होची unit length, suppose wire टा हला unit length रो and extension भी होची unit length of cross section by unit amount, by unit amount, this extension is by unit amount, then force required, okay, the force required to double the length of the wire, that is the force required, the force required to double the length of the wire, to double the length of the wire. So this will be equal to, Young's modulus will be equal to the force required to extend this by unit length. Okay. Next we will do some problems related to Young's modulus. The question is the length of a suspended wire. Example 1. The length of a suspended wire increases by 10 to the power minus 4 increases by 10 to the power minus 4 of its original length. Of its original length. Original length 10 to the power minus 4 होची when a stress of 10 to the power 7 Newton per meter square
when a stress of 10 to the power 7 Newton per meter square is applied on it. Okay, is applied on it. Calculate the Young's modulus of the material of the wire. Applied on it, calculate the Young's modulus of the material of the wire. तो Young's modulus बाहर करिया पे, so what is the trick to find the Young's modulus? ना longitudinal stress by longitudinal strain. तो first basic को हमें जिबा longitudinal stress by longitudinal strain. So Young's modulus we know Young's modulus is F by A, force per unit area, divided by change in length by original configuration. This is my Young's modulus. So y I can write as FL by A delta L. FL by A delta L. This you know, Young's modulus. This will be the Young's modulus FL by A delta L. तो हमको कौन गिवन देजी क्वेश्चन ले, the length of a suspended wire increases by 10 to the power minus 4 of its original length. Okay, and when stress दे दीजिए, तो स्ट्रेस हमको माने F by A दे दीजिए, स्ट्रेस इज F by A, तो F by A हमको कहते दीजिए 10 to the power 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ओके, तो स्ट्रेस इज गिवन 10 to the power 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड द स्ट्रेन कहते दीजिए, स्ट्रेन इज 10 to the power minus 4 टाइम. ओके, तो स्ट्रेन इज गिवन डेल्टा L by L is 10 to the power minus 4. So we will calculate easily. So there is no need to calculate this. So F by A will be 10 to the power 7 Newton per meter square divided by strain. Strain will be 10 to the power minus 4. So this is equal to, strain is unitless, तो एटा कितना होगा वैल्यू 10 to the power 11. तो Young's modulus will be 10 to the power 11. तो unit will be Newton per meter square as the unit of the stress. Stress unit ja Young's modulus. Okay, this much clear? This much clear? दिख बुझिएगा? Okay. So there is nothing. तो तुमको कौन देछि ना स्ट्रेस दे दीजिए क्वेश्चन ले, और स्ट्रेन भी दे दीजिए, तुमको इजीली खाली कैलकुलेट करियार अछि कोन यंग्स मॉड्यूलस. तो यंग्स मॉड्यूलस तुम जानछ कोन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन. तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस तुमको गिवन अछि 10 to the power 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन केते अछि 10 to the power minus 4. So you can easily calculate this. So the value will be 10 to the power 11 Newton per meter square. Next question we will do. A structural steel rod has a radius of, a structural steel rod has a radius of, structural steel rod ro radius तुमको given अछि 10 mm and a length of, steel rod रो तुमको length given अछि, तो length is 1 meter, length of 1 meter. Next is a 100 k Newton, a 100 kilonewton. Okay, 100 kilonewton force F stretches it, force F stretches it
along its length, stretches it along its length. तो लेंथ एलंग रे मु कौन कली वेयर को स्ट्रेच कली तो फोर्स मते दीची केते 100 किलो न्यूटन. देन कैलकुलेट द स्ट्रेस, द elongation and strain of the rod. First is calculate the stress, second is the strain, third is the elongation of the rod. Elongation of the rod. सो केमती करिया याको तो हम कौन गिवन देछि रेडियस दे देछि, लेंथ देछि रॉड रो, फोर्स दे देछि. ओके तीनटा जिंस देछि. तो फास्ट कोन रेडियस, तो हियर आर इक्वल टू 10 to 10 mm. तो ताको हम कन्वर्ट कर दोछि 10 into 10 to the power minus 3 मीटर. सो एटा गिवन अछि. नेक्स्ट जिनस कौन अच्छे तो मुझे डायरेक्ट लिख पारि 10 to the power minus 2 मीटर, 10 to the power minus 2 मीटर. आउ कौन गिवन अच्छे लेंथ दे दी 1 मीटर. ओके लेंथ 1 मीटर, एल लेला 1 मीटर. नेक्स्ट इज फोर्स, तो फोर्स देला केते 100 किलो न्यूटन. सो एटा जो 10 to the power 5 न्यूटन. 100 किलो न्यूटन माने कौन 100 into 10 to the power 3 न्यूटन, दैट इज 10 to the power 5 न्यूटन. Next we know stress. Stress is force per unit area, force per unit area. तो F by A, तो F मते गिवन अच्छी 10 to the power 5. A एरिया में केमती बाहर करिवे तो स्टील रॉड दे हमको, तो एरिया तार केमती बाहर पाई आर स्क्वायर. क्रॉस सेक्शनल तार केमती स्टील रॉड हेले भी क्रॉस सेक्शन एमती आसीयो, तो क्रॉस सेक्शन इज सर्कुलर. So the area will be pi r square. So this will calculate. Cross section is pi r square. So pi r square more कितना हो? So this will be 10 to the power 5 divided by 22 by 7. Radius रो square कितना होचे? तो radius वाला मोर 10 to the power minus 2. So 10 to the power minus 2 रो square. So this will be 10 to the power 5 plus 4. एटा जो 10 to the power minus 4 plus 4 into 7 divided by 22. So this you will calculate 7 by 22 तो तुम बाहर करिवो. This will be something 0.318. So एक मैं लिख परिबी 3.18. ओके 0.318 ले हम ताको 3.18 into 10 to the power केते हो 8. एटा 9 हला सेटा केते वैल्यू हो 10 to the power 8. तो वैल्यू विल बी इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. द स्ट्रेस रो जहाँ यूनिट यार से यूनिट आसो. तो केते वैल्यू आसला 3.18 10 to the power 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. सो दिस विल बी द स्ट्रेस. नेक्स्ट टाइम बाहर करिया कोन स्ट्रेन बाहर करिया. तो हाउ विल कैलकुलेट द स्ट्रेन. स्ट्रेन रो फार्मूला कोन चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ. तो चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ फाइ मु कोन करबी ना मु जानि छि y इक्वल टू यंग्स मॉडुलस वैल्यू मु जानि छि FL by A delta L, FL by A delta L. तो या धर मु डेल्टा L वैल्यू काट दे परिबी. डेल्टा L केते हो बिकॉज आई हैव गिवन has a radius दे दीजिए, लेंथ दे दीजिए एंड फोर्स दे दीजिए. सो आई हैव गिवन दिस. सो आई कैन कैलकुलेट डेल्टा L एज FL divided by AY. डेल्टा L will be FL by AY. तो यंग्स मॉडुलस, हाँ यंग्स मॉडुलस ऑफ द वेयर गिवन दीची. तो यंग्स मॉडुलस ऑफ द वेयर केते दीची 2 into 10 to the power 2 into 10 to the power 21 ना 11. 2 into 10 to the power 11. This is given as the Young's modulus. So using this Young's modulus I can calculate. So this is FL. F is our 100 kilonewton. So this is 10 to the power 5 into length. Okay. Length is 1 meter. Length of the rod. So 1 meter divided by AY. So AY area mu kete bahar kali pi r square.
सो एरिया इज पाई आर स्क्वायर तो पाई आर स्क्वायर जो करिवो केते वैल्यू आसियो एफ एल बाई ए वाई तो एफ एल वैल्यू जो 3.18 दिस इज माय स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया फोर्स पर यूनिट एरिया को डायरेक्ट लिख देले भी हम किसी दरकार नहीं एरिया कैलकुलेट करिया तो फोर्स पर यूनिट एरिया के 3.18 इंटू 10⁸ दिस इज फोर्स पर यूनिट एरिया देन लेंथ बाय यंग्स मॉडुलस सो लेंथ केते अछि 1 बाय यंग्स मॉडुलस जो करियो केते आसियो 2 इंटू 10⁻11 2 इंटू 10⁻11 एको कैलकुलेट करिया सो 3.18 बाय 2 केते आसियो 1.11 हेले 5 18 1.59 इंटू 10⁻8 माइनस 3 केते आसियो -3 सो 1.59 10⁻³ सो एटा मोर आसियो 1.59 mm 1.59 mm so strain बाहरी गला नेक्स्ट पचारछि व्हाट विल बी द एलोंगेशन ऑफ द रॉड व्हाट विल बी द एलोंगेशन ऑफ द रॉड elongation माने कोन द चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ सो elongation will be elongation of rod this will be delta L change in length by original length L so delta L एठी केते अछि 1.59 mm divided by length हला केते 1 meter so this will be 1.59 mm आंसर केते आछो 1.59 mm so this will be the elongation in the rod so the elongation in the rod this will be 1.59 mm next question what is the percentage increase in length of the wire what is the percentage increase in the length of the wire percentage increase in the length of the wire length of wire कौन गिवन देछि मते of diameter 2.5 mm of diameter 2.5 mm आ कौन देछि diameter सहित दे stressed by a force of 100 kg weight stressed by a force of 100 kg weight stressed by a force of 100 kg weight then question पचारिछि Young's modulus of elasticity of wire given देछि तुमको Young's modulus of elasticity so Young's modulus of elasticity given is equal to केते देछि 12.5 into 10⁻11 dyne per centimeter डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर एतिक तुमको गिवन देछि तो एटा यूज करके तुमर बाहर करियार अछि कोन परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द वायर एटा हम बाहर करिया तो कोन गिवन देछि फास्ट लिख दवा यंग्स मॉडुलस दे देछि y equal to 12.5 into 10⁻11 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिस इज गिवन नेक्स्ट आ कौन देछि फोर्स दे देछि 100 kg weight माने 100 into 9.8 न्यूटन तो बाहर करियो दिस विल बी द फोर्स तो दिस विल बी 980 न्यूटन तो 1 न्यूटन केते डाइन 1 न्यूटन is 10⁻5 this will 10⁻5 dyne 1 newton is 10⁻5 dyne so this will be 98 10⁻5 है एटा तुम हिजो कत 98 into 10⁻6 98 into 10⁻6 dyne so this will be the force
फोर्स बाहरी गला यंग्स मॉडुलस तुमको एति गिवन देछ ओके तो रेडियस केते देछ 1.25 mm this is given so this will be 1.25 into 10 to the power minus 3 meter next हमको पचारे what is the percentage increase in the length of the wire तो आम जानी यंग्स मॉडुलस y इक्वल टू FL बाय ए डेल्टा एल तो आमको फास्ट बाहर करार अच्छी कौन चेंज इन लेंथ डेल्टा एल बाय एल सो दिस मीन्स डेल्टा एल बाय एल विल बी इक्वल टू एल एट आसो एफ डिवाइडेड बाय वाई ए एफ बाय वाई ए सो एफ बाय वाई एल एफ वैल्यू मत देगी गिवन कहते 98 इंटू 10 टू द पावर 6 देन वाई वैल्यू भी मत दे दी 12.5 तो नेक्स्ट इज एरिया हाउ विल कैलकुलेट द एरिया so this will be Young's modulus I will multiply this by 12.5 into 10 to the power 11 with area तो एरिया टा मोर केते आछो पाई r स्क्वायर सो 22 by 7 into r स्क्वायर जतल करबी केते आछो 1.25 र स्क्वायर into 10 to the power minus 6 this I will calculate so এটা ক্যালকুলেট করলে কত আসবে ডেল্টা এল বাই এল উইল বি তো this will be 98 into 7 divided by 12.5 into 22 and one value will be 1.25 per square this will be something 1.5 into 10 to the power minus 6 so this value you will calculate it will be calculated to be 15.96 into 10 to the power minus 2 15.96 into 10 to the power minus 2 this will be the calculation so this value this is my delta L by L next delta L by L into 100 this will be 10 to the power minus 4 delta L by L into 100 मोर केते आछो 15.96 into 10 to the power minus 2 so this will be the answer मोर केते हो 0.16 percentage the percentage increase in length of the wire will be 0.16 percentage percentage increase in length this will be 0.16 percentage next is classification of the material on the basis of stress strain curve classification of the material on the basis of stress and strain curve classification of material on the basis of stress strain curve so suppose the materials which have larger plastic range of extension the material which have larger larger what plastic range of extension they are known as ductile material plastic range of extension are known as ductile material the ductile material suppose I will draw for the graph for the ductile material
this graph will be something like this. This will be for the ductile material. So this is known as elastic limit. This point is my elastic limit for the ductile material, and this will be my breaking point. So this will be my elastic limit and this will be my breaking point. So this is the curve for stress versus strain that I am पढ़ी Hooke's law रे. Okay, एमती आसियो कौन this is for ductile material. So ductile material आमे देखिले as shown the stress strain curve. Okay, so their fracture point is widely separated. So their fracture point is widely separated. So it is separation बेसी अछि fracture point. Their fracture point is this separation A to B is widely separated. This is widely separated. Okay. So widely separated जेहेतु भाई मु कौन कहूँ separated from this elastic limit, from the elastic limit. तो से एटा इजिली कौन ब्रेक हुए नहीं, इजिली ब्रेक हुए नहीं. किंतु जदि मु कंसीडर करी कार डक्टाइल मटेरियल इंस्टेड ऑफ डक्टाइल आई विल टेक द ब्रिटल मटेरियल. तो यार एग्जांपल कौन नहीं परिया दिस डक्टाइल मटेरियल. सो सच मटेरियल्स दे विल अंडरगो an irreversible increase in length before this ending of its before snitching. So this will be irreversible changes किछि हबो जोटा तुमे कहउछ कोन ता भितरे किछि आसीबो कोन किछि certain force will be restored in it which will try to convert it back into its original position. तो original position को आनिया पे ता भितरे किछि force रहउछि जो force टा तुमे कहउछ restoring force. नेक्स्ट केस हमें कंसीडर करिया फॉर द हाँ यार एग्जांपल कौन हो कॉपर एल्युमिनियम. ओके कॉपर एल्युमिनियम आयरन. ओके दिस विल बी द एग्जांपल ऑफ दिस डक्टाइल मटेरियल एक्सेट्रा. these are the ductile material. Next we will consider for the brittle material. Brittle material. Brittle material. So brittle material पे stress strain curve मोर केंदे हो stress versus strain. So for the brittle material you will observe this will go certain this. तो ये पाखापाखि माने रेंज टा पाखापाखि रहइबो. सपोज दिस विल बी द पॉइंट ए एंड दिस विल बी माय पॉइंट बी. बुझी होछ ना तार जो इलास्टिक लिमिट आ जो कोन एंडिंग जोटा तुमे करछो ब्रेकिंग पॉइंट इलास्टिक लिमिट आ ब्रेकिंग पॉइंट दे विल लाई नियर टू ईच अदर. इलास्टिक पॉइंट लिमिट एंड ब्रेकिंग पॉइंट दे विल लाई नियर टू ईच अदर. ओके तो इलास्टिक लिमिट और ब्रेकिंग पॉइंट भीतर जेहेतु स्मॉल गैप रोची तो ताको मु कौन कहूँ तो ब्रिटल मटेरियल तो दे हैव वेरी स्मॉल रेंज ऑफ प्लास्टिक एक्सटेंशन. मु कहि परिबी दे हैव वेरी स्मॉल रेंज ऑफ प्लास्टिक एक्सटेंशन. वेरी स्मॉल रेंज ऑफ प्लास्टिक एक्सटेंशन. तो जेहेतु तांकर गैप स्मॉल रोची ए टू बी भितर से एक्सटेंशन तांकर कौन हो वेरी स्मॉल. सो दे आर वेरी स्मॉल रेंज ऑफ प्लास्टिक एक्सटेंशन. तो दीज आर सच मटेरियल्स ब्रेक as soon as the stress is increased beyond the elastic limit. इलास्टिक लिमिट पर जिते मु फोर्स बढ़ेबी द स्ट्रेस विल इंक्रीज. सो बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट beyond the elastic limit when the stress is increased, when the stress is increased, when the stress is increased then the material will break down. Is increased
So after a जदि मुझे किसी फोर्स दिए the after a when I will give the stress then beyond the elastic limit a पर जिते तुम extend कर object then it will certainly break a पर कौन है material break है so the stress is increased then the material will break down. The material will break down. Okay, and elastic limit और breaking point भीतर very small gap. Okay, therefore the elastic limit extend मुझे करी when the stress will be given beyond this elastic limit then this material will be break down. तो example कौन कहीं परियो example है परियो glass, ceramics, mica. These are the examples. Glass, ceramic, mica. So these are certain classification of the materials on the basis of stress and strain curve. The stress and strain curve को आमे ती analyze करिवा. So there will be two materials. So one will be the brittle material and one will be the ductile. Ductile ऊपर हम first पढ़ी थले. Then next brittle ऊपर पढ़ले. So brittle ले हमर कौन very small gap रोची breaking point और elastic limit भीतर. So the material will break down after a certain limit of this stress यदि मुझे बढ़े दिए elastic limit पर then the material will be break down and for this ductile material after the elastic limit मुझे stress भी बढ़ोची material किछि breaking down होने किंतु material extend करूची after the breaking point if I will extend this stress then the material will break down. Thank you.